Over 121 people lost their lives in a stampede at a religious congregation or satsang on Tuesday in Uttar Pradesh's Hathras district. The event was organized by self-styled guru Bole Baba, also known as Narayan Sakar Hari. Bole Baba, originally named Suraj Pal Singh, hails from Bahadur Nagri village in Uttar Pradesh's Kasganj district. A former head constable with the UP Police's intelligence unit, he served for over 18 years before taking voluntary retirement in 1999. After taking voluntary retirement from the UP Police, Suraj Pal Singh changed his name to Narayan Sakar Hari and embarked on a spiritual journey. He hosted satsangs across UP and started gaining a substantial following in Rajasthan and Madhya Pradesh as well. During his tenure as a police official, he lived in Agra. परिवार में पहले तो ऐसे भाई तारा के नाते से जाते थे, पूरी नौकरी करते थे, ऑफिस में जाते थे, और जो पड़ोसी थे वहाँ के एटा के आगरा के, तो वहाँ पर ही सब लोग पर इकट्ठे होते थे। तो हम समझते थे जब आए यहाँ पर, तो हमने समझी इनके पड़ोसी हैं, मिलने जुलने वाले, जो बाबा जी भाई के घर पे आए हैं, जन्मभूमि पे आए हैं देखने के लिए। हर मंगल को होता था, केवल मंगल को सत्संग करते थे, उसके बाद संगत अपने चली जाती थी, आती थी, नमन करी और चली गई। कितनी भीड़ होती थी, किस तरह से? भीड़ तो मैडम यहाँ पर ऐसे मान लीजिए आप लाखों की भीड़ हो जाती थी। हमारे यहाँ कोई ऐसी कभी कोई बात ही नहीं हुई। Unlike traditional godmen, Narayan Hari is often seen in a distinctive attire of a white suit and tie or simple kurta pajama. He is often accompanied by his wife Prem Bati, also known as Mata Shri. Belonging to a well-to-do Dalit family, Narayan Hari was second among three brothers. He does not have any children. 2001 से पहले यहाँ रहते नहीं थे, यहाँ पे नौकरी करते थे, बाहर रहते थे, और जब यहाँ आए हैं तब हमने उनको जाना है, तब पहचाना है। उसके पहले हम जानते भी नहीं थे कि हमारे गांव के हैं, आते नहीं थे कभी गांव में। Despite maintaining a low profile with the media, Narayan Hari has faced many controversies. In 2022, he organized a satsang in Farrukhabad during the COVID pandemic, which drew a crowd of over 50,000 people, much beyond the permissible limit. To ensure his security during his public appearances, Narayan Hari employs a security team named Narayani Sena, consisting of men and women guards who escort him to and from his ashram to satsang venues. जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। Bodies of those who died in yesterday's incident are being identified before being handed over to their families. The injured are being treated at different hospitals near Hathras. Authorities continue to investigate the circumstances surrounding the stampede as UP Chief Minister Yogi Adityanath has sought a detailed report on what led to the incident.